हमें नहीं लगता कितना जल्द हो जाए तो करना पड़ेगा। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Switch on your camera. Settle down as fast as you can. And Sonal Priya. Yes, ma'am. Tell me. Page number 78. From page number 78 from in this final years of life. Page number 78. In his final year of his life. In his final year of life. ये तो ऑलमोस्ट खत्म है। चैप्टर 3 अब शुरू हो रहा है फिर तो। चैप्टर 3 शुरू करना था। मैम लास्ट पेज नंबर ये था 76 96 76 76 Okay, this stanza was left. ये बेसिकली पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर ही लिया है। जब से 5th बचा है तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो जिस्ट है आपको वो पता चल गया है। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि अगर आपको क्रेविंग किसी चीज का क्रिएट करना है, ठीक मतलब सॉरी कोई चीज अगर आपको इनकलकेट करना है अपनी हैबिट में, तो यू नीड टू हैव क्रेविंग फॉर दैट। ठीक है, वही चीज आपने फेब्रिज में देखा। ठीक है, फेब्रिज से पहले किस किस चीज से कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पे देखिए जॉगिंग से। ठीक है, अगर आपको जॉगिंग करना है, वेट लूज करना है, यू नीड टू हैव क्रेविंग फॉर दैट। क्योंकि एक बार जब आप दौड़ते हैं या जॉग करते हैं तो एक इंडोर्फिन रस जो होता है, ठीक है, उस चीज की क्रेविंग हो जाती है। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो होता है वो फील होता है। ठीक है, तो उसकी क्रेविंग हो जाती है ताकि हम लोग नेक्स्ट डे फिर से जॉग करें या कंटिन्यूएशन प्रोसेस हमारा रहे। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन हुआ था आपका जो फोन वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो ये क्रेविंग फॉर डिस्ट्रैक्शन, क्या बगल में रखा हुआ है, बगल में फोन रखा हुआ है, वाइब्रेट करेगा तो एक डिस्ट्रैक्शन फील होगा ही होगा। इसके अलावा कंपैरिजन किया गया ये निकोटिन से, क्रेविंग फॉर निकोटिन। ठीक है, और जूलियो का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा, राइट। इतना सारा जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो बेसिकली किस पर्पस के लिए, कि अगर आपको पहला चैप्टर में आपने देखा कि वी हैव क्रेविंग फॉर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि कैसे कोई चीज सीखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कैसे हम लोगों के हैबिट में कोई भी चीज इनकलकेट होता है। ठीक है, हैबिट लूप जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। ओके, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई चीज का मतलब आपके दिमाग में है प्लान, कुछ भी प्लानिंग हो सकता है, वेदर यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आईएएस बनना है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, कैट क्रिएट कर क्रैक करना है या कुछ और करना है, जो कुछ भी करना है आपको, तो वो एक क्रेविंग आपको क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, लालसा मन में लाने की जरूरत है ताकि आप वो हैबिचुएटेड हो जाए और वो काम रूटीनली आप परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये था चैप्टर 2 का मेन जेस्ट। फाइन, तो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट है। आज से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 जो है आपका गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। फाइन, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर, यानी जो हैबिट हमारे अंदर इनकलकेट हो चुकी है उस चीज को हम कैसे चेंज करें, या कोई बुरी आदत अगर लग गई है तो उस चीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये नेशनल फुटबॉल लीग के कोच हैं टोनी डंगी, जो इनकी टीम है हमेशा से मतलब सदियों से, यहाँ पे डिकेड्स लिखा हुआ है कि हमेशा हारती ही आई है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाए और कैसे लाए, जो अचानक से फिर वो हर गेम में वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डन, समझ आया? ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं गोल्डन रूल ऑफ हैबिट, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर, और यहाँ से पढ़ेंगे पल्लवी कुमारी। पल्लवी, आप क्लास क्यों नहीं आती हैं? MWF में एचआर का क्लास तो आप लोगों का ऑफलाइन होता है।
मैं अभी वहाँ पटना में नहीं हूँ, गाँव में हूँ, तो टाइम लगेगा मुझे आने में। कब आना है? क्लासेस शुरू हो चुकी है तो यू नीड टू कम ओवर। मैं बोली घर में घूमने जाना। चलिए खैर शुरू करिए। बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है, लगे आप रहने दीजिए। अनुराग गौतम। Yes, ma'am. Switch on your camera and start reading from you. The game clock at the far end of field says there 8 minutes and 19 seconds left when Tangi, the new head coach, the Tampa Bay Buccaneers, one of the worst teams in the National Football League. Not a mention in history of professional football starts to feel tiny glimmer of hope. It's head to Sunday afternoon, November 17, 1996. The Buccaneers are playing in San Diego against the Chargers, a team of appeared in the Super Bowl the previous year. The Buccaneers are losing 17-16. They have been losing all game. They have been losing all seasons. They have been losing all decade. ये देखा हमने कि हमेशा वो हारते ही आएंगे। जब कोई चीज एक मिनट, जब कोई चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है तो हैव बीन यूज करते हैं। यस, प्रोसीड। The Buccaneers have not won a game on the West Coast in 16 years, and many of the team's current players were in grade school the last time the Bucks had victorious season. So far this year, third record is 2-8. In one of those games, the Detroit Lions, a team so bad it would later be described as putting the lace in a place, beat the Bucks 21-6, and then 3 weeks later beat them again 27-0. One newspaper columnist has started referring to the Bucks and America's orange doormat. Spain is predicting that Dengue, who got the job only January, could be fired before the year is done. On the sidelines, however, as Dengue watched his team arrange itself for the next play, it feels like the sun has finally broken through the clouds. He does not smile. He never lets his emotions show during a game, but something is taking place on the field. Something he's been working toward for a year. As the cheers from the Oshley crowd of 50,000 rained down upon him, Tony Tangi sees something that no else does. He sees proof that the plan is starting to work. From here, Aditi Kumari. Tony Dungy had waited an eternity for this job. Achha, this is also a good word. What do you mean by this? Eternity for this job? Tony Dungy had waited an eternity for this job. ये आप कैसे यूज करेंगे अपने वर्ड्स में? Nobody?
Yes, for a long time I was waiting for this job. Okay, so use this also. For 70 years have proved the sidelines as an assigned assistant coach, first at the University of Minnesota, then with the Pittsburgh Steelers, then the Kansas City Chiefs, and then back to Minnesota with the Vikings 4 times in the past decade. He had been invited to interview for head coaching position with NFL teams. All four NFL teams होगा मैम कोचिंग का जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है NFL team with NFL team. यहाँ पे NFL क्या है? पोजीशन है No one was alert. शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन फुटबॉल टीम मैम, फुटबॉल टीम फॉर्म किया है नेशनल फुटबॉल लीग. नेशनल फुटबॉल लीग यहाँ है फर्स्ट ही स्टार्टिंग लाइन है ये आपका. ये हेड कोच है कहाँ के? नेशनल फुटबॉल लीग के. ओके, प्रोसीड. part of the all 4 times the interview had not gone well. Part of the problem was Dangi coaching philosophy. In this job interview, he could patiently explain his belief that the key of winning and changing players' habits. He wanted to get players to stop making so many decisions during a game. He said he wanted them to react automatically, habitually. If he had instilled the right habits, his team would win. Period. Champions do not go extraordinary things. Dangi would explain they do ordinary things, but they do them without thinking too fast for the other team to react. They follow the habits they have learned. How the owners could ask, are you going to create those new habits? Oh no, he was not going to create new habits. Dangi would answer, players spend their lives building the habits that got them to the NFL. No athlete is going to abandon those patterns simply because. What do you mean by this? abandon. मैम abandon means एकदम छोड़ देना. Exactly. तो यहाँ पे टोनी डंगी what is he saying? What is going to change? यहाँ तक में क्या डिस्कशन हुआ? टोनी डंगी का क्या स्ट्रैटेजी हुआ इसमें? क्या टारगेट बनाया इन्होंने? When someone is reading, you people don't focus or what? यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इनका क्या स्ट्रैटेजी है. ही इज नॉट गोइंग टू क्रिएट न्यू हैबिट. क्यों? क्योंकि एनएफएल टीम पूरी लाइफ को इस स्ट्रैटेजी को सीखने में लगा दी है, तो अचानक से सारा चीज चेंज करना विल नॉट बी फाइन. और क्या चाहते हैं यहाँ पे? ये बहुत सारा हैबिट इकट्ठा इनकलकेट नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, वो चाहते हैं कम ही स्ट्रैटेजी सीखे लेकिन वो हैबिट में इनकलकेट हो जाए. यस, अंडरस्टूड. यहाँ देखिए, he wanted to get players to stop making so many decisions during the game. He said he wanted them to react automatically, habitually. ठीक है, वो habitually खेले, बहुत ज्यादा उसको डिसीजन ना लेना पड़े कि ये सामने से टीम ऐसे कर रहा है तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए. इतना डिसीजन मेकिंग में उसका दिमाग नहीं चले. ठीक है, जैसे रैट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा ना, जब एक चीज बार बार करवाया गया तो आपका ब्रेन थोड़ा कम काम करता है, वो डेली वाला एक्टिविटी जो आप करते हैं. ठीक है, किसी और चीज यूजफुल थिंग में आपका दिमाग लगता है. यस, सेम थिंग यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे डंगी ने क्या सोचा, कोई नया हैबिट हम नहीं क्रिएट करेंगे इन लोगों में. ठीक है, इतना ही सिखाएंगे जितना कि वो ऑटोमेटिकली वो खेले, किसी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में उसका दिमाग ना चले. ओके, प्रोसीड फ्रॉम हियर. कृष्णा कुमार.
So rather than creating new habits, Dungy was going to change players' old ones. And the secret to changing old habits was using what was already inside players' heads. Habits are a three-step loop: the cue, the routine, and the reward. But Dungy only wanted to attack the middle step, the routine. He knew from experience that it was easier to convince someone to adopt a new behavior if there was something familiar at the beginning and end. His coaching strategy embodied an axiom, a golden rule of habit, change that study after study has shown is among the most powerful tools for creating change. Dungy recognized that you can never truly extinguish bad habits. Rather, to change a habit, you must keep the old cue and deliver the old reward, but insert a new routine. That's the rule. If you use the same cue and provide the same reward, you can shift the routine and change the habit. Almost any behavior can be transformed if the cue and reward stay the same. The golden rule has influenced treatments for alcoholism, obesity, obsessive compulsive disorders, and hundreds of other destructive behaviors. And understanding it can help anyone change their own habits. Attempts to give up snacking, for instance, will often fail unless there is a new routine to satisfy old cues and reward urges. A smoker usually can't quit unless she finds some activity to replace cigarettes when her nicotine craving is triggered. hold. ये आपने क्या पढ़ा? Cannot, Quite. is it? Yes. No, ma'am. Quit है, quit. Then meaning differs, right? Quiet means Yes, ma'am. to keep quiet, chup raho, and quit means छोड़ना. You cannot quit unless, proceed. What happened? Lost connection or what? Okay, leave it. Till here, what we have understood, anyone can interpret, then please let me know. Akriti? He said that he would not change the cue and the reward, but he would only change the routine. So that would be easier in changing the habits. Okay. Other than that, what has been explained over here, like if you have nicotine habit, cigarette का habit है, तो old cue और आपका जो finally जो reward है, वो दोनों same रहेगा, बस आपका routine change होगा, तभी कोई चीज आप quit कर सकते हैं. और यहाँ पे सिर्फ स्मोकर का ही नहीं, यहाँ पे अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, ठीक है, ये सारे चीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. ये गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज से ही आप ये चेंज कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. कब? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चाय का लत है, ठीक है, तो एक क्यू है हमारे पास कि हाँ एक टाइम होता है 9 बजे चाय चाहिए, तो 9 बजे एक ट्रिगर फील होता है कि हाँ इस टाइम मेरे को चाय मिलना ही मिलना चाहिए. फिर पीने के बाद जो सेटिस्फेक्शन फील होता है, ठीक है, दैट इज रिवॉर्ड. अब क्या करना है, मेरे को चाय छोड़ना है, ठीक है, आई वांट टू क्विट दिस. चाय एक बुरी आदत है, खराब आदत है, उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ? तो उसके उस जगह पे जहाँ पे मैं चाय पीती हूँ, उस जगह पे मैं गर्म दूध लेना शुरू करूंगी, ठीक है, सेम प्लेजर फील होगा. यस, गर्म दूध आप लीजिए, सेम प्लेजर. तो वही यहाँ पे कहना है कि वो जो सेम रिवॉर्ड, सेम प्लेजर अगर फील हो, तभी कोई भी चीज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल दिया गया है कि चेंज द रूटीन, नॉट योर क्यू एंड रिवॉर्ड. ऑलराइट, सेम इसीलिए देखिए सिगरेट छोड़ने के लिए एक बीच में ये भी आया था आपका कोई च्युइंगम, ठीक है, क्या बात है. ठीक है, तो जो भी च्युइंगम है वो आप चबाइए, उस तरीके आप उसको क्विट कर सकते हैं.
फाइन, ये चीज आगे आप और बहुत सारा एग्जाम्पल रिलेट कर पाए. सो यहाँ से प्रोसीड. रोहित कुमार. 4 times Jangi explained. 4 times Dangi explained his habit-based philosophy to team. Honor 4 times. They listened politely, thanked him for his time, and they hired someone else. They in 1996 the full beginners called Dangi flow to Tampa Bay and once again laid out his plan for how they could win. The day after the final interview, they offered him the job. So this is the golden rule of habit change. You cannot extinguish a bad habit. आप खत्म नहीं कर सकते bad habit को. You can just change. You can only change it. ठीक है? This is the main golden rule. अब यहाँ कैसे? यहाँ पे देखिए. How it works? Use the same cue, provide the same reward, change the routine. Dangi's system would eventually turn the Bucks into one of the league's winningest teams. He would become the only coach in NFL history to reach the playoffs in 10 consecutive years. The first American coach to win a Super Bowl and one of the most respected figure in professional at articles. Which athletes, his coaching techniques would spread throughout the league and all of sport. His approach would help illuminate how to remake the habit in anyone's life. But all of that would come later. Today in San Dingo, Dangi Just wanted just to win. wanted to win. तो ये जगह है जहाँ पे अभी गेम होने वाला है. क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ से देखेंगे आप लोग. एंड रोहित रीड डेली. ओके, मेक टारगेट 1 or 2 पेजेस. सिर्फ यहाँ पढ़ने से नहीं होगा, घर पे भी पढ़िए. यहाँ से सत्यम. From the sidelines, Dungy looks up at the clock, 8:19 remaining. The Bucks have been behind all game and have squandered opportunity after opportunity in typical fashion. If their defense doesn't make something happen right now, this game will effectively be over. San Diego has the ball of their own 20-yard line, and the Chargers quarterback Stan Humphries is preparing to lead a drive that he hopes will put the game away. The play clock begins and Humphries is poised to take the snap. But Dunkey isn't looking at Humphries. Instead, he was watching his own players aligning into the formation that ओके, किसके साथ हो रहा है गेम? हैमफ्रीज के Humphries. साथ. ठीक है. हाँ, तो ये इसका अपोनेंट है. वही बताया जा रहा है कि अपोनेंट को नहीं देख रहा है. ही इज जस्ट फोकसिंग इन हिज ओन गेम. Own players aligning into a formation that they have spent months perfecting. Traditionally, football is a game of feint and counterfeits.
trick plays and misdirection. Coaches with the thick, thickest playbooks and most complicated schemes usually win. Dungy, however, he taken the opposite approach. He isn't interested in complication of obfuscation. Obfuscation. It means Complication. complication. Obfuscation means. Same meaning is same. That's why or is written over here. Oh, it's complication or obfuscation. When Dungy's defensive players line up, it is obvious to everyone exactly which play they are going to use. Dungy has opted for this approach because in theory he doesn't need misdirection. He simply needs his team to be faster than everyone else. In football, milliseconds matter. No, instead of teaching his players hundred of formations, he has taught them only a handful, but they have practiced over and over until their behaviors are automatic. When his strategy works, his players can move with the speed that is impossible to overcome. But only when it works. If his players think too much or hesitate or second guess their instincts, the system fall apart. And so far, Dengue players has been a mess. This time, however, as the Bucks line up on the 20-yard line, something is different. Take Regan Buckner, defensive end who has settled into a 3-point stand on a scrimmage line instead of looking up and down the line. कोई फुटबॉल Trying to खेलने वाले हैं यहाँ पे? अगर हैं तो रेज योर हैंड. अच्छा, यू ओनली सत्यम. तो स्क्रिमेज लाइन क्या होता है? मैम स्क्रिमेज लाइन क्या होता है? मैम वो जो गोल कीपर के आगे लगा रहता है. करेक्ट. चलिए, प्रोसीड. Instead of looking up and down the line, trying to absorb as much information as possible. Upso is looking only at the cues that Dungy taught him to focus on. First, he glances at the outside foot of the opposite lineman. His toes are back, which means he's preparing. These things are just to focus how the opponent are going to play and what will be their attacking step. ठीक है? His toes are back, which means he is preparing to step backward and block while the quarterback passes. Next, Upshaw looks at the linesman's shoulders, rotates slightly inwards, and the space between him and the next player a fraction narrower than expected. Upshaw has practiced to how to react to each of these cues too many times that at this point he doesn't have to think about what to do. He just follows his habits. San Diego quarterback approaches the line of scrimmage and glances right, then left, bucks the count and takes the ball. He drops back 5 steps and stands tall, swiveling his hands looking for an open receiver. 3 seconds and passed since the play started. The stadium's eyes are the television cameras are on him. So most observers feel. Come here, Sunil. Yes, ma'am. So most observers fail to see what happening among the Buckners. As soon as Humphreys took the snap, Upshaw sprang into action. Within the first second of play, uh, um, he darted right across the line of screaming. So fast, the offensive lineman couldn't block him.
within the next second upshot ran for more paces downfield. His step a blur. In next second, Upshaw moved three strides closer to the quarterback. His path possible for the offensive lineman to predict. As uh, as the play moved into its 4 second, Humphreys, the San Diego quarters back in quarters back is suddenly exposed. He hesitates. He hesitates, sees Upshaw from the corner of his eye, and and that's when Humphreys makes his his mistake. He start thinking. Humphreys shots. Uh, Humphreys spot a teammate, a, rook, a rookie tight and named Brian Roche 20 yards downfield. There another San Diego receiver much closer, waving his arm, calling for the ball. The short passes is the safe choice. Instead, Humphreys, under pressure, performs a split second analysis. Crocs is Crocs his arm Roche. That hurried decision is precisely what Dungree what Dungree was hoping for. As soon as the ball is in the air, a Buckner safe, safety named John Lynch start moving. Jobs Lynch jobs was straightforward. The when the play ये सारा गेम का स्ट्रैटेजी है, yes, ठीक है। तो जो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं उन लोगों के लिए टफ होगा। तो ये जो क्या नाम है, सत्यम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। ये आप पढ़ करके कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, फाइन। ये सारा स्ट्रैटेजी किस तरीके से गेम हो रहा है, अंडरस्टूड। तो कैसे गेम चल रहा है यहाँ से लेकर के आपका, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में गेम ही है, ठीक है। मेरा तो खैर पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर में आपको गेम का ही स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा 2-3 चीज से कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्वियसली सेकंड से शुरू करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी कैसे खेल रहा है इस चैप्टर का, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए पहले से ही पढ़ के रहिए आप। पीडीएफ तो होगा आपके पास है। तो ये चैप्टर रीड आउट करके रखेंगे आप। और देखिए आगे ये कंपैरिजन है, क्रेविंग फॉर रिलीफ, ये आगे जब आएगा फिर एक्सप्लेन किया जाएगा, ऑलराइट। Because I will able to explain just meaning of that, but strategy एक्चुअल में कैसे गेम हो रहा है ये कोई फुटबॉल प्लेयर ही बता सकता है। जी मैम। Roll 1, Present, ma'am. 2, 3, 3 present, ma'am. 5, 6, is present, ma'am.
7, 8, Yes, ma'am. 9, 9 present, ma'am. 10, Yes, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, ma'am. 20 is there? 21, 22, 23, 24, Sorry. 25, 26, ma'am. 25. 26, 27, 28, 39, 30, 31. Yes, ma'am. विशाल कुमार भी हैं यहाँ पे, पता भी नहीं चल रहा है। कौन है? 32, 32 है यहाँ पे। No, ma'am. All right, thank you. See you next class.